Hello students, this is Rashmi Lata Singh. In this video, we will complete all exercises of Unit 4, Chapter 1, Rain from Class 2nd English Marigold Workbook. So, let's we start. First question is in answer the following questions is Where does the rain fall? बारिश कहाँ होती है? So answer is the rain falls on field and tree. बारिश मैदान में और पेड़ों पर होती है. Okay. Second question is where is the rain raining? बारिश कहाँ हो रही है? So answer is the rain is raining all around. बारिश जो है हर जगह हो रही है. Okay. Third question is how did the children protect themselves from the rain? बच्चे जो हैं अपने आप को कैसे बचाते हैं? बारिश से कैसे बचाते हैं? Answer is the children protect themselves from the rain by an umbrella. Okay. Next question is question number 2. Choose the correct option and fill in the blanks. टिक मार्क क्वेश्चन है ये. आपको कोई एक ऑप्शन बताना है जो सही होगा और फिल इन द ब्लैंक्स जो भी ब्लैंक दे रखा है उसे फिल करना है. ओके. सो फर्स्ट वन इज The rain is raining dash. बारिश कहाँ हो रही है? And option A is on the ship. Option B is all around. Option C is nowhere. Option D is all of these. And the correct option is option B. All around. Okay. Second one is Children use dash to protect themselves. Children क्या यूज कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए? Option A umbrellas, Option B home, Option C plants, and Option D clothes. And the correct option is Option A umbrellas. Okay. Question number 3 is Fill in the blanks with the help of the words given in the box. यहाँ पे नीचे fill in the blanks दिए हुए हैं जिसको helping box में जो भी words दिया हुआ है उसे सही जगह fill करके complete करना है. Okay. So first one is the rain is raining all around. Okay. Second one is it rains on the umbrellas. Third one is it falls on field and tree. Fourth one is the rain also falls on the ships at sea. Okay everyone. Next question is in grammar skills. What the question? Question is make negative interrogative from the given sentences. One has been done for you. आपको नीचे sentences दिए हुए हैं. नॉर्मली हम ऐसे sentences को assertive sentence या फिर affirmative. assertive में भी दो तरह के sentences होते हैं, एक affirmative और एक negative. तो ये affirmative sentences हैं. ओके. अब आपको क्या करना है, इससे ही negative interrogative sentences बनाना है. मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉट का यूज़ हो और वो सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस हो, यानी क्वेश्चन पूछे हुए सेंटेंस हो. ओके. फर्स्ट वन इज देन व्हाट द फर्स्ट वन ही इज गोइंग टू द टेम्पल. ही इज गोइंग टू द टेम्पल. वो मंदिर जा रहा है. एंड द नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस इज ही नॉट गोइंग टू द टेम्पल. क्या वो मंदिर नहीं जा रहा है? ओके. इसी तरह से आपको बाकी सेंटेंसेस को भी चेंज करना है नेगेटिव इंटरोगेटिव में. ओके. सो सेकंड वन इज
students are dancing on the stage. And the negative interrogative sentence is, are students not dancing on the stage? Okay? Third one is, it is raining heavily. And the negative interrogative is it not raining heavily? Okay. Fourth one is, it is an interesting novel. And the negative interrogative is it not an interesting novel? Fifth one is, his family lives in Bengaluru. And the negative interrogative sentence is, does his family not live in Bengaluru? Sixth one is, he is playing cricket. And the negative interrogative sentence is he not playing cricket? Okay. Question number 2 is, write the rhyming words. आपको यहाँ पे rhyming words लिखने हैं. Okay. So first one is fall. And the rhyming of fall is ball. Second one is tree. And the rhyming word of tree is free. Third one is failed. And the rhyming word of failed is shield. Fourth one is sea. And the rhyming word of the sea is tea. Okay. Question number 3 is, circle the words which are correctly spelled. Okay, यहाँ पे आपको उन स्पेलिंग्स को सर्कल करना है जो करेक्ट हैं. So first one is rain. And the spelling of rain is R-A-I-N. Okay. Second one is ship. And the spelling of ship is S-H-I-P. Third one is sea. And the spelling of sea is S-E-A. Fourth one is fall. And the spelling of fall is F-A-L-L. Fifth one is failed. And the spelling of failed is F-I-E-L-D. Okay everyone. Next question is question number 4. Write the plural of the following words. यहाँ पे सभी वर्ड्स जो है वो सिंगुलर दिए हुए हैं जिसके आपको प्लूरल लिखने हैं, प्लूरल फॉर्म लिखना है. ओके. सो फर्स्ट वन इज गर्ल. एंड द प्लूरल ऑफ द गर्ल इज गर्ल्स. सेकेंड वन इज अम्ब्रेला. एंड द प्लूरल ऑफ अम्ब्रेला इज अम्ब्रेलाज. थर्ड वन इज ट्री. एंड द प्लूरल ऑफ द ट्री इज trees. Fourth one is sea. And the plural of the sea is seas. So next question is an activity. And the question is, observe the pictures given below and answer the questions, how is the weather? ओके, नीचे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं जिनको आपको ऑब्जर्व करना है, महसूस करना है कि वेदर कैसा है, मौसम कैसा है. ओके. सो फर्स्ट वन पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें सन जो है शाइन कर रहा है, बिल्कुल स्माइल कर रहा है, चमक रहा है. ओके. सो हाउ इज़ वेदर? इट इज़ सनी वेदर. ओके, इट इज़ सनिंग. सेकेंड पिक्चर देखेंगे आप तो उस पर अम्ब्रेला बना हुआ है, इट मीन्स इट इज़ रेनी. थर्ड वन पिक्चर आप देखेंगे तो इसमें क्लाउड ही क्लाउड है, यानी बादल ही बादल है, इट मीन्स इट इज़ क्लाउडी. ओके. फोर्थ वन आप देखेंगे तो इसमें बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, है ना, इट मीन्स इट इज़ विंडी.
ओके। एंड फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन, आप पिक्चर देखेंगे तो इसमें एक क्यूट सी बेबी है जिसने वुलन क्लॉथ पहन रखा है, वुलन क्लॉथ। ओके, गर्म कपड़े पहने हुए हैं। इट मीन्स इट इज कोल्ड। ओके, सो यहाँ पे सारे एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं इस चैप्टर की। आई होप आप लोग को समझ आया हो। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर को शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू so much for watching. Bye bye everyone. Have a nice day.